Karachi University just makes you a different kind of person. The khwari just to reach to Karachi University and study there and come back and sit in the buses and sit on the floor and just make do of whatever resources you have available makes you a completely different person. As a production point of view, I think because film is a larger and longer format, right? So unless आपने उसको दिल से नहीं बनाया हो और सही से नहीं बनाया हो, आप पकड़े जा सकते हैं. What are your hobbies? What are my hobbies? Yeah. I make chutneys. अगर किसी की बेटी है या बेटा भी है, so I think the first thing they can teach them is to how to be financially independent. कि मैं जहाँ हूँ आज, अगर मेरी फैमिली नहीं होती मेरे साथ खड़ी हुई, मेरे पेरेंट्स ने वो नहीं किया होता जो उन्होंने मेरे लिए किया, या मेरे बहन भाई अगर उन्होंने नहीं किया होता तो मैं आज कुछ भी नहीं होती. ना मैं अपनी नौकरी कर सकती थी, ना अपने बच्चे पाल सकती थी. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो हर स्टोरी पाकिस्तान. आज की गेस्ट है हमारे साथ साइमा सलीम. इनका प्रोडक्शन से FMCG, टेलको, एकेडमिक्स बहुत वसी कैरियर है. तो आइए मिलते हैं साइमा सलीम. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम आयला. लुकिंग नाइस. आई एम गुड. हाउ आर यू? थैंक यू सो मच. आप ठीक है? मैं ठीक हूँ जी. ठीक है. हाँ जी. साइमा बताएं कहाँ से कहानी शुरू हुई? From where you started your journey after your graduation? You did your masters? I did my masters in communication from Karachi University. Okay. तो उस ज़माने में सिर्फ दो ही फील्ड्स होती थी, journalism and advertising. Okay. And I found advertising interesting, so I ended up working in Manhattan International. Okay. That was an agency back there, even now agency, but that was a big agency back then, and I started as a copywriter. Okay. As a copywriter, you started? Copywriter, okay. yes. Okay. Okay. And then over the period of time, I made it to creative director. I stayed in the same agency, got married, had kids, worked throughout. And then eventually I thought the agency is fine and I could do the concepts and everything, but production was a way forward for me. So I started working with a production house called Azad Film. I still work with them. Okay, okay. And that's how I evolved from just writing the concept to Azad making... is Jami's. Yeah, Azad Okay, Film is okay. Jami's production house, and I work with him as an associate director. Okay, Zabardast. And then? And then over the period of time, we worked on different ads, and we were very lucky to be part of some of the very evolving, changing, and social change-driven campaigns, like UNDP, like UN Women campaign about domestic violence, like Burn Victim campaign. A lot of work that was coming our way was about social change. It was about when you make a communication that can drive some kind of change, and that kind of initiatives were very rare in our fraternity. So mostly people were working towards commercial advertising, and we started working towards social change campaign. ऐसी चीज़ों को लोग अंडर कार्पेट कर देते हैं ज़्यादा, कि ज़्यादा जिक्र ना किया जाए, दिखाया ना जाए. और दिखाया भी ना जाए, and then the communication that was being developed to put light on these issues were very... College students were doing it, but no professional was actually coming and taking up these issues and making it a big, deal about it. So I think that's where we started coming together. Achha. And yahi tha that led us to start working with Shaukat Khanam, Indus Hospital. So right now you're still working with Azad Films? Yes. Okay. And you started with the Manhattan, and then FMCG and Telco also. Okay, so while I was in advertising, I worked on a lot of brands, and the brands were FMCGs like Reckitt Benckiser. Telco mein I worked with Mobile Inc, Parktel back then. All these Telenor. So all these Zong. So all these brands were under my portfolio as a creative director. Okay. So I never worked in an FMCG. I worked for them. Yeah. Okay. Yeah. Okay. And so you have a career, like a great career. So academics की तरफ कैसे आए आप? पढ़ाना कैसे शुरू किया? पढ़ाना कैसे शुरू किया? I think it was more from the point of view is that now that I have
some experience, maybe I can just go back and give some practical advice to the students. Yeah. It wasn't intended to do a bookish knowledge transfer because वो तो उनके पास थी. इंटरनेट पे भी बहुत मवाद अवेलेबल है. I think what was missing was the practical knowledge and to just bring them to sets. So when I started teaching, I actually made my students do a lot of practical work. I brought them to sets and I gave them a real exposure because I thought that was missing. Hardcore experience. Yes, and because as a student, I also realized that what I studied in my university, the practical life was completely different. Opposite. Right? And I thought अगर मुझे back then किसी ने बता दिया होता कि practical life में ये चीज़ें ज़्यादा important हैं, तो probably I would have focused on those more, right? But when I became a teacher, I made it a point that I gave them a practical exposure. Basic difference क्या है एक मीडिया स्टूडेंट you taught media sciences. Yes. मीडिया स्टूडेंट का और एक आपका जो आपके साथ प्रोडक्शन में या जो मेन फील्ड में आपके प्रोडक्शन में लड़के काम कर रहे हैं लड़कियां काम कर रही हैं उनमें और उनमें क्या फ़र्क है बेसिक फ़र्क क्या है I think the basic फ़र्क ये है कि the media students just sees the glamour part of life. They just see the final हमने product. टीवी में आना है या हमने टीवी में आना है या ये बहुत ग्लैमरस एड बनेगा, right? But the reality is a lot more different than that. You know, to take a first light shot means कि सुबह का shot लेने के लिए आपको रात के 2 बजे उठ के set पे जाना पड़ता है, right? And dedication, focus. That hard work nobody wants to do. We see a lot of kids coming and still interning with us from very, very big universities. And when we tell them, listen, we have to take an early morning shot and you have to be, your call time is 2 o'clock in the night. Yeah. And they say, no, I can't. I don't think I can do it. अच्छा. Right? And it's too early for me. हाँ. And I'm like, but to get a good shot, you need to get up that early, right? Okay. But I think the hard work is the understanding that there's a hard work involved, and a good shot is not just a coincidence. It's a planned exercise. Pre-planned. It's pre-planned. हाँ. So no good thing is a coincidence in life. Okay. राइट सो आई थिंक ये बहुत उनको ज़रूरी है समझना. और जो प्रोडक्शन में लोग इन्वॉल्व हैं जिनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है उनको ये समझ आ चुका है. उन्हें ये समझ आ चुका है कि व्हाट टाइम दे हैव टू कम. सो ऑल्दो उनके पास फॉर्मल डिग्री नहीं है but they know how to do it. They know how to do it and they know the importance of getting up at 2 o'clock in the night to get a first morning shot. Right? So there is a huge difference between kids who come from a very privileged background, from a very expensive film schools, who do not want to do a hard work, and then kids who come from very normal background, but they understand the importance of hard work and they bring it to the table. And those are the ones actually are on the set. So if you see right now on the set, who's on the set is not people coming from the universities. Okay. The people coming from a very humble background, but they learned the trick and they were willing to put the hard work. And how was your experience at Karachi University back then? Okay, my experience in Karachi University back then, which was really back then, was good. Karachi University just makes you a different kind of person. I think the khwari just to reach to Karachi University and study there and come back and sit in the buses and sit on the floor and just make do of whatever resources you have available makes you a completely different person. बंदा बना देते हैं आपको. हाँ, इंसान बना देते हैं बिल्कुल. बंदे को इंसान बना देते हैं. So I think Karachi University has produced amazing students. Yes. And they all. अब का I don't know. अब क्या है? अब भी Karachi University के students are more willing to do the hard work because just than being a in private Karachi, university student. The private university students, yes. अच्छा. You did a podcast even. Yeah, I did a podcast called Love to Hear. अच्छा. And what is it all about? जरा डिटेल में बताएं. So it was the whole idea was that you take the best of literature available and get the best of actors and tell them to read it in a more expressive manner because they know acting, so they can be amazing voice actors too. So Sanam Saeed did it for me, but the thing is, Sanam Saeed did that podcast for me. Actually, I am like I love listening to this podcast that is available online. It's called Modern Love. अच्छा. उसमें ये होता था कि बहुत अच्छे written articles were read by renowned actors.
So, they put a lot of expression into the reading and just bring it to life. And I tried to do something similar with the literature that was available in our market. Okay. Yeah. Okay, that's nice. And that was in which language? It was in English though. Okay. Yeah. तो टारगेट मार्केट उसकी कम थी? टारगेट मार्केट उस एक्चुअली हमने बहुत इनिशियली स्टार्ट किया था. हमने 2 पॉडकास्ट रिकॉर्ड की थी. उसके बाद द कोविड हैपेंड. Okay. बट सो वी वांटेड टू एक्सपेरिमेंट एंड सी हाउ पीपल टेक इट एंड डू You still do it? आप अभी भी करती हैं? नहीं, आई डोंट डू इट. So you discontinue करती हैं? हाँ. Okay. But I And you can go plan back. to do it? Yes. Okay. अच्छा. तो how was your experience overall like ये आज़ाद फिल्म्स के कैसा रहा? अभी तक आप उसके साथ आप अटैच हैं और you are continuing with it? I think Azad Film is one of the most conscientious production houses in Pakistan. And it is very difficult to do. It is very difficult to be conscientious and choose the project you want to do. It is absolutely difficult to choose the client that you want to work, and if the client philosophy does not collide with your philosophy, brave enough to turn around and say no to them. Okay. Or excuse yourself from that project. Okay. I have seen, we have actually walked out of certain meetings saying that I think you should, telling the client that I think you should not be doing this project because that's a waste of money. And that's a big thing because for a production house, it also means losing business. Saying no is a big thing. Saying no is a big thing. And we have gotten a call from the client later and saying, we did it with somebody else, but thank you for telling us because it was a waste of money and now it's shelved. So that kind of relationship that you can have with the client, it's not just about making money, it's also about making product and making TVCs or communication that can actually do something. Yeah. So you have good co-workers there, yeah. Yeah, we like to tell the client what works for them and what will not work for them, and that I think that is what has helped us to build the relationship that is based on trust. So people who are working with us now, they work with us over and over again, not because that we are the best production house, but because we are going to be honestly telling them what will work for your brand and what will not work for your brand. Exactly. हाँ. खाली ये कि बस काम नहीं करना, अच्छा काम करना है. हाँ. अच्छा, what's your say on films as a medium? जैसे आपने सारा प्रोडक्शन का काम भी किया है, एडवर्टाइजमेंट्स भी किए हैं, तो फिल्म एज अ प्रोडक्शन और उसका एज अ मीडियम आप क्या डिस्क्राइब करती हैं उसे? Film is like a love larger affair, than right? life. Larger than life. Escapism है उसमें. Film is like a love affair, right? You have to put a lot in it. Right? And नहीं, and even for the audience भी जा रही है तो उसने टिकट खरीदा, सिनेमा में गया, उसने अपना टाइम दिया और 3 घंटे 2 घंटे उसने और कुछ नहीं किया, बस सिर्फ और सिर्फ उसने फिल्म देखी है और वो भाग के गया फिल्म देखने दुनिया से, दुनिया के परेशानियों से, और एस्केपिज्म का एलिमेंट है उसके अंदर. फिल्म है तो मतलब इन्वेस्टमेंट है टाइम की भी. टाइम की, बट you want me to answer it from the production point of view or ये from तो the मैं audience? में तो मैं एज एन ऑडियंस बता रही हूँ. Okay, so Now yes. आप बताएं एज अ प्रोडक्शन. As a production point of view, I think because film is a larger and longer format, right? So unless आपने उसको दिल से नहीं बनाया हो और सही से नहीं बनाया हो, आप पकड़े जा सकते हैं. It's not like a 30-second ad that the bad acting can really go float, right? The bad actor can really be caught in the film in a first 1 minute, right? And that's when you lose your audience. That's when you cheat your audience also, because film is something that they paid and came to watch, right? So इसीलिए फिल्म की प्रेप एंड फिल्म की प्लानिंग इज़ अ लॉट मोर क्रिटिकल देन एनीथिंग एल्स. इसीलिए उसका स्क्रिप्ट आर लॉट मोर क्रिटिकल देन एनीथिंग एल्स. एंड द रियलाइजेशन दैट द ऑडियंस इज कमिंग and paying, and you might want to give them something to take home. It is a big responsibility for a production house or somebody related to the film. So film, we have done 2 films, 021 and More. And both are critically acclaimed, but both were really hard work, and it was only possible because the team was willing to do it.
And these two films were in like which year? Like Moore was is I guess 2015. 15. Okay. हाँ, And the other one? is 2014. Okay. Yeah. Okay. तो So उसके yeah. बाद से अभी फिल्म में अभी उसके काम नहीं बाद से किया. देयर कपल ऑफ फिल्म्स दैट वर अंडर प्रोडक्शन बट अभी तक वो Shelved. हाँ या तो शेल्फ हो गई हैं या पोस्ट के लेवल पे हैं बिकॉज फिल्म इज एन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो सो नॉट Yeah. जस्ट यू हैव टू मेक इट यू नीड टू द पोस्ट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो द हमें- पब्लिसिटी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हमें मूर इन्वेस्टमेंट टाइप फिल्म्स चाहिए भी तो. वी नीड फिल्म्स लाइक मतलब कोई जिसमें कोई विजन हो, कुछ दिखाया जाए, कुछ कहानी हो, बट एक्टिंग हो. आज मूड टाइप फिल्म चाहिए तो बट ऑडियंस ऑडियंस कौन है मतलब आई सी अमोला जट के अलावा तो आई डोंट थिंक कि किसी फिल्म की ऑडियंस अवेलेबल थी. आई मीन मूड टाइप फिल्म अगर हम उस वक्त मूड टाइप फिल्म वर्कड the cinema going culture has gone so low right now and their films I just saw Glass Worker, right, a beautiful film, beautifully made, beautifully crafted, but were people watching it in cinema? The answer is when I went to watch the show multiple times, the cinemas were almost empty. And we can look the other way and not say this, but the reality is just that. लेकिन हमने तो स्टैंडिंग ओवेशन दिया था मूर को जब हमने फिल्म देखी थी बैक देन. तो आई हैव अ टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस. यू आर राइट कि द ऑडियंस इज नॉट देयर, कमर्शियल फिल्म नहीं है. या बट मूर के वक्त ऑडियंस इसलिए भी थी कि मूर के वक्त सिनेमाज खुल रहे थे. नया एक्सपीरियंस था. ठीक है, मूर वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू फिल्म्स that are part of the relaunch of the film industry in Pakistan, right? उस वक्त एट्रियम खुला था, उस वक्त नए नए सिनेमाज बन रहे थे, खुल रहे थे. राइट नाउ एट्रियम हैज़ क्लोज डाउन, राइट नाउ अ लॉट ऑफ सिनेमाज हैज़ क्लोज डाउन. दैट रियली also tells you that your audience is also moving towards OTT platforms. A business, besides this, business after COVID is different. After 2020 onwards, the business setup is different. Our production, advertising, film, ये सब कुछ का setup भी different हुआ है market में. You mean setup means? Bad setup you mean? Like they are doing the branding thing, investment वगैरह कम हो गई है पहले से. For advertising, I think as long as you want to sell the product, there will always be a market. ठीक है. Right? So advertising is a different ball game altogether. So when it comes film, and what about films? The film is if you have a commercial venture like Mola Jat, that caters to the market and even international market, then you have a formula film that it will work. Right? But we need to see how, if you want to do an art film or if you want to do something different, how it can really come around, because people like to watch, because art film की audience भी different है और कम है and the economics को भी आप वो नहीं कर सकते deny. Watching film right now is an expensive proposition. Yes, it is. Right? So would you like to create a film that is watched by a few, because it will not work for the production house also, it will not bring back the business for the filmmaker also, or would you like to make that film and put it on web, or put it on the OTT platforms and stuff, because I think that is the way forward. Yes. People are already sitting home, they have already invested in the membership of those platforms and they would want to see stuff from that. I think हम अगर possessive ना हो सिनेमा के बारे में और ओपन माइंडेडली सोचें इस पूरे सिचुएशन को, तो दैट इज़ द वे फॉरवर्ड. व्हाट अबाउट SIUT? SIUT आपने इतना काम किया SIUT में एज व्हाट? I work there as a creative and communication consultant. Even now? Yes. Okay, you're still there. Okay. Yeah. SIUT is an interesting twist in my life, I think. अच्छा, एकदम से घूमते घूमते SIUT कैसे पहुंच गई आप? एकदम से नहीं पहुंची थी. अच्छा. I was already working on the social good campaigns for different organization. ठीक है. Jami was working with me, and so we were already doing voluntary work at SIUT. Okay. And then one of the volunteer work that I was doing, I was approached by Adeeb Sahab, and he said, "Oh, Dr. Adeeb Rizi. Would you?" What a man. Yeah, I mean, what a legend. Exactly. I think just having him around just inspires you so much. Yeah. And उन जैसे लोग नहीं हैं. बिल्कुल. और जब उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ काम करें, definitely you can't say no. तो I thought, I mean,
कि मैं कोई कोई भी तो मना नहीं करे, कोई भी मैं मना कोई नहीं ख्वाब करेगा तो नहीं देख रही। और ये था कि इत्तेफाकन जिस दिन उन्होंने मुझे कहा, उसके दूसरे दिन जिस दिन उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ काम कर रही हैं बस आज से, और सेकेंड डे ही कोविड शुरू हो गया. अच्छा. So then the healthcare communication became a lot more important than Very any exactly. time हाँ. ever. पहली concern ही अभी है. Yeah. हाँ. So COVID के बारे में most of the communication that was developed and most of the in COVID ward footage was actually churned out by me and my department at SIUT, and that was also used in all the mostly on in the TV channels and media. The information, there was a lot of work done for the information. That's when my interest in healthcare communication developed, and that's when I started doing communication specific to patients and patient care and health literacy. And yeah, so that is what I have been doing for the last 5 years consistently. SIUT के साथ. SIUT. Okay. तो working with Dr. अदीब रिजवी बिल्कुल उनकी umbrella के अंदर, तो it's like बहुत ही dream come true type चीज़. Yeah, like I think I feel most proud when I say I report to him directly. Okay. You know, like so it's like imagine having a boss. We all know that he is like a very humble human being. उसके अलावा और बताएं कुछ चीज़ जो हमें ना पता हो डॉक्टर अदीब रिजवी के बारे में. डॉक्टर अदीब रिजवी के बारे में आपको क्या नहीं पता? ओके, सो डॉक्टर अदीब रिजवी के बारे में आई थिंक काफ़ी कुछ सबको पता है, जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है. जो बात डॉक्टर अदीब रिजवी के बारे में आई थिंक जो उनको ही पता होगी, जो उन्होंने इंटरेक्ट करते होंगे उनसे, मेरी तरह या कुछ और अच्छे लोग जो हर वक्त उनके साथ होते हैं. डॉक्टर अदीब रिजवी जो हैं वो एक बहुत ही रेयर तहजीब इंसान है. So when you meet him, he will not let you go unless you sit with him and have chai, and he will give you biscuits and he's like, no, you eat first, and then we will talk. Like you a know, fatherly thing. Like a fatherly figure. Like he will still, when I'll go, every time I go to him, he says कि कैसे आई हो, घर कैसे जाओगी, अभी रात हो गया है, कौन छोड़ने जाएगा. So you know, like so somebody who is so concerned about your safety, and not only me, like every girl who works in SIUT, everyone who works in SIUT. It is a big thing. Yes. It is a big thing to have a father figure, and he's the big boss. And he's a big boss. So imagine the तहजीब that he has, जो culture उन्होंने SIUT का develop किया है, वो उनकी वजह से हर level पे trickle करता है. और ये मैंने किसी organization में नहीं देखा. कि आप बात कर भी सकते हैं और तमीज़ से भी कर सकते हैं, अपनी बात पहुंचा भी सकते हैं, और आपका लहजा भी कभी नहीं चेंज होगा, आपकी आवाज़ भी कभी नहीं बढ़ेगी. सो ये जो चीज़ है ना, वो जो SIUT में अदीब साहब ने इनकलकेट की है, आई थिंक कामनेस के साथ सारे काम, कोई भी किसी से ज़ोर से बात नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो. मतलब दैट्स द बेसिक, ये वर्क एथिक्स में है ये तो, वो ये दैट इज ट्रू, हाउ टू ट्रीट अदर्स एक्चुअली. अच्छा, you have achieved a lot and still you are doing a lot. I have. And माशाल्लाह, मतलब आपने 15 साल कितने 20 years अब ज़्यादा हो गए वैसे. 20 I started my career in 1999. Okay. So I think 25. आप इतने सालों में continuous you are like you are exploring basically. Even now you are, मतलब आपने देखा ये एक set pattern नहीं है. Different companies हैं, different organizations हैं, और health भी आपने touch किया है. But it's good. Actually, yeah. So I get bored very easily. So yeah, and also मुझे लगता है कि ये जो like life is too short and we should do whatever. We should experiment. Yeah. So हाँ, so ये था कि I started with advertising, then I went into production, which I'm still there. You're still there. Then I went into podcast, then I went into teaching kids. And you're still with the university? No, I don't teach you have them left. anymore. Okay. But you in near future you want to do it again? The students, क्योंकि students के साथ काम पढ़ाना जो है ना, वो एक अलग उसका एक charm है. Near future, I want to really start a course or a program for healthcare communication, because I think that is missing. I think that is a niche. I think there are not many people who know about it. I think there are so many things that you can learn.
small things like consent, privacy of the patient, healthcare literacy, public health में बात कैसे करनी है, ये जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो मिसिंग है हमारे सोसाइटी में भी और प्रोफेशनल्स में भी. Yeah. So from teaching, I then went to SIUT for healthcare communication. वहाँ पे I did my PGD in bioethics. So now I know healthcare ethics and related things, the issues that we face and how can we handle it. So now I have a degree in that as well. So that's nice, mashallah. And what about जामी के साथ काम? वो तो हमने पूछा ही नहीं मैंने आपसे. Another important question. जामी के साथ काम करते हुए, मतलब इतना टाइम हो गया आपको उनके साथ काम करते हुए. How he is as a boss? Okay, in Jami's office, there's a culture. So we call everyone boss. Okay. So like if I have to refer to Jami, I'll say boss. And if he has to refer to me, he'll say boss. If we have to refer to the staff at this set or a makeup artist or whoever, everyone is a boss. Okay, so it's not just the word. It's also the feeling that we have for each other. Also, at the most amazing part about working with Jami is that when you sit in the meeting, everyone is a boss, so everyone has a voice. So means the ideas can flow from any direction. Freedom of expression. Yeah, so the best of the ideas can actually come from a makeup artist also. Anything, right? ऐसे ही है. So everyone brings in their ideas and we, without any judgment or without any ego, we just accept the best idea. And that's what makes the film the best ever. And the kind of communication that is churned out, that is, I think, good because everyone feels heard. And rightly so, because the boss has created that culture. The boss being Jami, right? He has created that culture that everyone can talk. So Jami के साथ काम करना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी, because he will not. आसान इसलिए क्योंकि इक्वल है और आपकी बात सुनी जाएगी, और मुश्किल इसलिए क्योंकि आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं है काम पे. हाँ, मुश्किल इसलिए है कि आप बगैर रिसर्च के काम नहीं कर सकते. अगर आपने किसी भी एक छोटे से चाय का भी ऐड बनाना है, आपने पूरा बुक पढ़ के आनी है उसके बारे में. इसमें सबसे लेटेस्ट काम क्या है इस वक्त एट द मोमेंट जामी के साथ, जो इट्स देयर इन द लाइक मीडिया? कौन सी चीज़ है अभी जो लेटेस्ट की है आपने? जामी के साथ जो लेटेस्ट अभी मैंने काम किया है, अभी जो हम बस करके उठे हैं, और आई थिंक बाय द टाइम दिस पॉडकास्ट विल बी ऑन एयर, इट विल बी on air also, is the work we have done for UNDP and Fatma Fertilizer, and it's a campaign regarding the development and growth and of the agriculture sector, but most importantly how the farmers are evolving and the digital technology is helping them become what they are today. Okay, that's nice. Okay, so even to do something like this, we had to do research and read what is happening in the other worlds, what can we show, what kind of shots will work, so everything is research oriented. Beautiful. So just by making an ad, I think you just learn so much. So one of the things that we did, and I think that was internationally acclaimed, was also the Dubai Expo video that we did. It's called Sacred Spaces. It's a video about different religion and how people can coexist, and how Pakistan is a beautiful amalgamation of all these different colors and faiths, and how everyone is different but everyone is also same, right? So even to do that, we went all the way from Sindh to the end of the पाकिस्तान, ठीक है, एंड स्कर्दू की छोटी सी मस्जिद में जाके भी उसके इमाम से पूरी इंफॉर्मेशन ली, हर चीज़ की रिसर्च की. That's the beauty. ये बात है. So the not only what you see on the screen. कि एक सेट पैटर्न के साथ काम नहीं करते. You like evolve and keep changing and like ढूंढते हैं चीज़ों को, तलाश करते हैं. And also अगर आप it's not just what you make for the screen, right? What you become as a person in the process of making something is also important. So very important. For me, I think Azad Film and Jami के साथ काम करने में ये बहुत होता है कि what happens in the ad is a different thing, but how you evolve as a person, what you learn about the process, how your knowledge base increases, is a different experience altogether. So basically आपने you got like हमेशा से अच्छा वर्क एक्सपीरियंस रहा है आपका कोवर्कर्स के साथ.
और अच्छे बॉसेस मिले हैं, आपने एक अच्छा एनवायरनमेंट देखा है, दैट्स अ बिग बिग ब्लेसिंग. Yeah, I think when people talk about media and when anyone comes to me and saying कि हम अपने मीडिया में अपनी बेटी भिजवाएं कि ना हाँ, भिजवाएं, एग्जैक्टली. तो मैं कहती हूँ बिल्कुल भिजवाएं. हाँ, Because I actually have met the best of people in this बेस्ट ऑफ द industry. पीपल, एग्जैक्टली. And I think they are best of people in the industry. और I आपने think, आपने सीखा उनसे ना, मैंने- आप दूसरों को सिखा रही हैं, तो दिस इज हाउ द चेन वर्क्स. हाँ, And I think अब things have changed हाँ. and everyone is learning about the ethics of work also. And the new generation is phenomenal. I think they are so fast and so good and so on talented, point. yes. And they know about their rights, they know about their limits, they also know about their boundaries, and that is fantastic. This is very important. वैसे. Yeah. हाँ, हमारे ज़माने में तो हम बावले थे. अच्छा, it's important to disconnect. आप इतना ये काम करती हैं, travel भी है उसमें, सब कुछ है. How you disconnect? मी टाइम कब आता है? It's my time. नहीं, मी टाइम आता है, और हमारे फील्ड में मी टाइम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है that okay, so we are idea people, right? कभी भी आइडिया आ सकता है. नहीं, but I'm saying to get the idea, हाँ, you need to keep putting experiences in your body, in your ठीक है. mind, right? To come up with something new, you need to keep observing things, you need to go see exhibitions, you need to go see performances, you need to see things outside your own field also, you know, to experience. I mean, it's like आपके पास एक दराज है, ठीक उसमें है. आप अपनी चीज़ें पसंद की भरते चीज़ें रहें, भरते रहें, ठीक है. भरते रहें, हाँ. और जब आपको उसमें से कुछ आइडिया निकालना होगा, तो हाँ. आपके जो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, दे विल कम इन हैंडी एंड दे विल हेल्प यू डेवलप समथिंग ब्यूटिफुल. ठीक है. और इवन लाइक ऑब्जर्विंग पीपल, और इवन टॉकिंग टू पीपल, और इवन मीटिंग पीपल, और इवन सो ऑल आई से इज के for me, me or any creative person, me time is important. Reading books are important, going to exhibitions What are are your important. hobbies? What are my hobbies? Yeah. I make chutneys. You make chutneys like for yourself? No, I used to make it commercially also. Oh really? Yeah. ये चीज़ तो हमें पता ही नहीं थी. Yeah, so I make false की chutney. अच्छा. And my hobbies is also. And commercially they are available? Yeah. You want They to? are available in the season. Yes. Okay, you can market. बताएं किधर अवेलेबल है? कौन से सीजन में कौन सी चटनी अवेलेबल है? People who know me, they know and they order, and I think इतना ही मैं बना सकती हूँ. लेकिन I think okay, so for me unwinding comes in different forms, right? ये तो बहुत ही So unwinding also comes in making chutneys. Unwinding also comes in I started a brand for small kids. So I used to make clothes for them. So I'm saying that for me, unwinding comes in different forms, right? मतलब आप मल्टीटास्क कर, हर जगह अपने हाथ, मतलब डिजाइनिंग में कपड़ों के, टॉडलर्स के कपड़े किस तरह? ओके, नाइस. अच्छा. So the brand is called Anokha Ladla. अच्छा, so it's for the boys. It's there. Yeah, it is there. Social page है. Yes. अच्छा, okay. So the thing is that so unwinding comes also. I'm a big believer of exercising and going for swimming and yoga, meditation, because that also helps with unwinding. But that's very important. Yeah, and especially in a field like ours where the timings are really horrible. Exactly. So once you are off from your work, you need to really go back and fix your life. Health is very important. So health is really important. सेहत वही बात है, सेहत है तो सब कुछ है. Yeah, वो वाली बात है. Absolutely. एंड इवन मुझे लगता है कि अगर आप आइडिया पर्सन हैं या आपका दिमाग ही बहुत काम है, तभी भी आपको एक लेवल पे अपने दिमाग को रेस्ट देना और उसको तो दिमाग फ्रीज हो जाता है, रिजुविनेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. तो यू डू लाइक योगा और मेडिटेशन या बोथ? No, I do yoga. I don't do meditation. अच्छा, okay. I do aqua aerobics or water-based exercises. Okay. I try to walk. Okay. जब भी मौका मिलता है, बहुत काम. तो ये काम के लिए आपने कहाँ ट्रैवल किया है? लाइक विद इन पाकिस्तान कहाँ? Within Pakistan, I've seen everything. We have traveled everywhere. Interior, Punjab. Yeah. So we did Telenor Rawa. That if you see that film, it went from Karachi to all the way to China border. Okay. And it was a 40-day shoot, and we traveled to each and every part of Pakistan. Okay. Right. So in 40 days. In 40 days. Okay. So
काम वाइज भी हाँ, सो आई हैव ट्रैवल अलॉट. पाकिस्तान मैंने इस तरह से बहुत देखा है. सेक्रेट स्पेसेस के लिए वी वेंट टू ऑल द मस्जिद, जमात खानाज, मंदिर्स, टू जस्ट गेट द बेस्ट पॉसिबल फुटेज फॉर दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस. सो पाकिस्तान मैंने वैसे देखा है. काम के सिलसिले में आई हैव बीन टू मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडिया, and London. But other than that, I like traveling. So for my personal, like a time out or where I get my ideas, so I make sure I travel whenever I can. And lovely. Yeah. मतलब सब कुछ है, चटनियाँ भी बन रही हैं, ट्रैवल भी हो रहा है, काम भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है. It looks like that, नहीं, लेकिन ऐसा it's a very it's a hard work. It's very hard. ना exactly, it's hard work. लेकिन it's amazing. और SIUT जैसे ब्रांड के साथ काम करना, जामी जैसे बॉस के साथ, सॉरी बॉस नहीं, सब बॉस हैं वहाँ पे, वो भी बॉस हैं, वो भी बॉस हैं, उनके साथ काम करना, it's like you have an opportunity and you have availed that opportunity. बात तो ये है, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, लोग कहते हैं चलो देखेंगे, मगर you have like you're living that life and it's nice. Yeah, I'm very fortunate that I got to work with all these people. I am also very fortunate to make certain choices in life and stick at to the right time with all these people also, because there are bad times and there are good times, and in the bad times, obviously when you work with somebody where your ethics come before the business, yes, there are days when you don't get work. So even on those days, sticking to your grounds, it's a big thing. And so I'm saying कि it looks like all flowery, but they are big, they are really bad glass days. Is always full, half full. हाँ, ऐसा लगता है, लेकिन ग्लास कभी-कभी जब हाफ हो जाता है तो बहुत strenuous भी हो जाता है. हाँ, because we are just humans, ऐसे right? ही है, साथ चलता है सब कुछ. What's your advice for Pakistan? कुछ बताना चाहेंगी पाकिस्तानियों के लिए? कोई एडवाइस? पाकिस्तानी काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हैं. इंटेलिजेंट हैं, yes they are. पाकिस्तानी बहुत हार्ड वर्किंग हैं. थोड़े से जुगाड़ू भी हैं. जुगाड़ू is good. I think जुगाड़ू is nothing wrong with being जुगाड़ू. They know the shortcuts. बट पाकिस्तानियों के लिए बस ये एडवाइस है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत जुगाड़ू भी हैं, which is great, which I think is a plus. बट थोड़ी थोड़ी चीज़ें में और अच्छे हो जाएं, जैसे टाइम दे दो, टाइम पे आ जाएं. पंक्चुअलिटी, हाँ, मतलब ये चीज़ें तो हम कर सकते हैं. हाँ, और पानी की बोतलें ना फेंकें गाड़ी से बाहर, मतलब बेसिक चीज़ें कर रहे हैं. बाकी आप बड़ी चीज़ें तो आप कर ही रहे हैं, मतलब बड़ी चीज़ों में तो कोई मसला नहीं है, आप लोग काफ़ी आगे ही हैं हम लोग. आई थिंक वी गॉट somehow we are mismanaged है सिर्फ. मेरे ख्याल में पाकिस्तानी ज़्यादा mismanaged. टैलेंट भी है, सब कुछ है, सिर्फ ये कि ऑर्गेनाइज नहीं है. आई थिंक कि अगर हम बड़ी बड़ी चीज़ें हम कर लेते हैं, फिल्में बना लेते हैं, बड़े रेस्टोरेंट्स बना लेते हैं, बड़े बड़े एड्स बना लेते हैं, ठीक है. एड्स के जो पर्दे के उस तरफ नज़र आ रहा होता है वो बहुत साफ़ सुथरा होता है, लड़की भी बहुत प्यारी लग रही होती है, घर भी उसका अच्छा होता है. सेट के इस तरफ सारा कचरा होता है. हाँ, ठीक है. तो हम सेइंग कि अगर हम बड़ी चीज़ें कर सकते हैं तो हम इन छोटी चीज़ों का भी ख्याल रख सकते हैं, और छोटी चीज़ें भी बड़ी इम्पोर्टेंट है. हाँ, और ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है. तो अगर ये चीज़ें बेहतर कर लें, बाकी जुगाड़ करते रहें, जो करना है करें. आई थिंक चल रही है, फ्लोटिंग द बोट इज़ फाइन, बट ये है कि अपनी बोट में खुद तो खड्डा ना करें. एग्जैक्टली. तो ख़वातीन के लिए क्या एडवाइस है पाकिस्तानियों के लिए? बिकॉज ख़वातीन का शो, आपकी हमने स्टोरी सुनी है, हर स्टोरी पाकिस्तान, तो अब आप बताएं कि ख़वातीन के लिए स्पेसिफिकली क्या एडवाइस है? एक एडवाइस जो आप देना चाहती है. एक एडवाइस ख़वातीन के लिए है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है. टू डू एनीथिंग इन लाइफ, टू मेक द डिसीजंस यू वांट टू मेक, टू स्टिक टू द डिसीजंस दैट यू हैव मेड, टू रेज योर किड्स, टू रेज योरसेल्फ. आई थिंक अगर किसी की बेटी है या बेटा भी है, तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग दे कैन टीच देम इज टू हाउ टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, so they can at least try and live life at their own terms. Exactly.
हाँ, किसी पे बर्डन ना हो और अपना सर्वाइव खुद कर सकें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कि जल्दी आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आए, आप काम भी करें और पढ़ें भी, सारी चीज़ें साथ साथ हों। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, आई थिंक फैमिली के सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं होता। फैमिली सिस्टम जो हमारे पाकिस्तान में फैमिली सिस्टम है ना, दैट्स अ बिग टाइम ब्लेसिंग। आयला, आई कांट टेल यू कि मैं जहाँ हूँ आज, अगर मेरी फैमिली नहीं होती मेरे साथ खड़ी हुई, मेरे पेरेंट्स ने वो नहीं किया होता जो उन्होंने मेरे लिए किया, या मेरे बहन भाइयों ने, या इवन माय ब्रदर इन लॉ एंड लाइक यू नो एवरीवन, माय फ्रेंड्स, खाला फूफियाँ, अगर उन्होंने नहीं किया होता तो मैं आज कुछ भी नहीं होती ना। मैं अपनी नौकरी कर सकती थी, ना अपने बच्चे पाल सकती थी। इवन माय फ्रेंड्स, you know, just to pick and drop my kids from school, just so it's a clan that is there. कोई भी आपको जो नज़र आ रहा होता है कि उसने इतने सारे काम कर लिए, वो कोई भी अकेले नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान में जो फैमिली सिस्टम है ना, ये बड़ा एक it's a blessing, big time. Pros and cons हैं हर जगह के, absolutely, लेकिन it's a big time blessing. It is a big time blessing. I think हम उसके बगैर survive ही नहीं कर सकते. A lot of women that are working right now are only working because their families they are there supporting, to support them. Yeah, exactly. Okay, a lot of us can actually go out for shoots and go out and travel and go out and learn new things, and it's because somebody at home is looking after your child or looking after your house. You know कि पीछे चीज़ें safe हैं. Yeah. हाँ, तो आप easily काम कर सकते हैं, move around कर सकते हैं, travel कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. Saima, it was lovely talking to you. It was lovely, like बहुत मज़ा आया. और आपके different roller coasters से हम work related मैंने बातें सुनी और बहुत बहुत अच्छा लगा. Thank you so much. And जी नाजरीन, तो ये था हमारा शो हर स्टोरी पाकिस्तान. इस तरह के शोज़ आप देखना चाहें तो हमें सब्सक्राइब करें और हमें बताएं, तो हम और ऐसे शोज़ आपके पास लेके आएंगे और ऐसे गेस्ट आपसे मिलाने के लिए लेके आएंगे. टेक केयर, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.